कर दे। Hello friends, I'm Manoj here. Welcome at GSS Core, and today we are going to discuss this year's OPSC essay paper. Fine. This was the first year when the new scheme of things was introduced. ये पहला साल था जब नई syllabus के हिसाब से एग्जाम हो रही है, and so everything was very new to the students. But questions were simple, very simple. In UPSC also, previously they were asking very simple and current affairs based topics, but gradually they have, you can say the UPSC has evolved to a level which I can say is very demanding, little bit difficult also sometimes. So we cannot say that if the questions are easy, so next year will be the same, or it indicates any pattern sort of thing. It never happens like this. You should always prepare for the next level. What kind of experiments any examination body will do, you don't know. So better you should prepare for any eventualities, any new pattern, any new design, any new toughness, any new level of topics, etc. You should be very well prepared. Fine. But let's come back to the point. This year they have asked, you can say mostly the current affairs based topic. It's very easy, very straightforward. So it will not bring challenge to any student as far as information is concerned. Information is concerned. This year's, you can say the marking will be decided mostly on the basis of two things. Number one is critical thinking, and number two, clarity in expression and structuring, sequencing, ordering, paragraphing, etc. Fine. Because always do remember, when we OPSC, say essay has two parts. The one is, or essay writing has two parts, content and crafting. Now, when it comes to the content, the first thing first, when you get any philosophical topic or something like that, the first and the biggest challenge is just one thing to get the meaning right. क्योंकि philosophical topics में को read करने के या meaning को interpret करने के दो तरीके होते हैं. First is apparent meaning and second is underlying meaning. Sometimes it's very vague, very subjective, very open-ended. But in this year's paper, it is nothing like this. It's very open. Sorry, it's very straightforward. Fine. It's uniform. It's, you can say, as far as content is concerned, information is concerned, it will not hurt any student. सबके लिए बहुत comfortable है. But again, आप सिर्फ UPSC में information के basis पे decide नहीं कर सकते. आप डिसाइड नहीं कर सकते. आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना ही पड़ेगा. और इस एग्जामिनेशन में इस बार जो फैक्टर डिसाइड करेगी वो है कंटेंट पार्ट में क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्राफ्टिंग पार्ट में इन द सेंस अरेंजमेंट, पैराग्राफिंग और सीक्वेंसिंग, etc. Right? Because the topic is of such nature that everyone carries the information. So information overload is there. और कई बार information overload या excess information की वजह से ज़्यादा big blunders होते हैं. क्योंकि आप जब लिख के आते हो तो आप भूल जाते हो कि ये ऐसे पेपर है, और आप जब लिखने लग जाते हो तो आप एक GS पेपर की तरह लिख डालते हो. It happens in UPSC also. पूरी GS पेपर की तरह लिख के आ गया, आप नहीं लिख सकते साहब. ऐसे की डिमांड ही अलग है, इसकी रिक्वायरमेंट अलग है, इसकी पर्पस अलग है. फाइन. सो लेट्स कम टू द पॉइंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग थ्रू द टॉपिक्स ओनली. फाइन.
तो इस साल के जो भी टॉपिक्स हैं वन बाय वन मैं लेता हूँ और फिर उसी बेसिस पे हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे. So the first topic was the impact of artificial intelligence, on society, right? So it says challenges and opportunities. Challenges and opportunities. Very simple topic, but as I say, that this topic is not about technology. टेक्नोलॉजी सिर्फ एक पार्ट होगी, दैट्स इट, नथिंग एल्स. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 एटसेट्रा, यू कैन सिंपली टच. आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है साहब इसमें, क्योंकि पूछ ही नहीं रहा है. क्योंकि पूछ कहाँ रहा है, एम्फेसिस कहाँ पे है, सी इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, फाइन, एंड डायरेक्शन इज ऑलरेडी सेट, means that the thinking line is already set in and around the challenges, in the sense the risk, threat, etc. Opportunity, in the sense how it brings opportunity in terms of economy, health, etc. Fine. So everything is very very well defined. तो सवाल उठता है कि हम इसमें लिखेंगे क्या, नंबर वन, एंड नंबर टू, what I shall write to get the edge. हम ऐसा क्या लिखेंगे जिससे हमें edge मिले, because ultimately any competitive examination is all about edge, whether you take the edge or not, that's everything. So it's all about how do you take the edge. I always say, तुम कितना जानते हो, कितना पढ़े हो, क्या कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है. Whether you are able to take the edge in the competitive examination or not, that's it. It's as simple as anything. So here, as far as introduction is concerned, fine. In any current affairs topics, it is safe to start with the current affairs itself. Safe. I'm not saying that is the only way to do it. आप अलग-अलग तरीके से भी कर सकते हैं साहब. Fine. For example, you can simply start Industrial Revolution 4.0. What is artificial intelligence and what are the things it is in news. यहाँ से भी start हो सकता है. Fine. If you wish, you can start with the deepfake also. आप वहाँ से भी न्यूज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और कीवर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डीपफेक से भी स्टार्ट कर सकते हो. AI, यू कैन से बिग कंपनीज कैसे यूज कर रही है, वहाँ से भी कर सकते हो, चैट जीपीटी भी कर सकते हो. इट्स ऑल योर इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, एटसेट्रा. So as far as introduction is concerned, you can go in two ways. Number one, आप चाहें तो कीवर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो करंट कंटेक्स्ट से स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी न्यूज से या कंटेक्स्ट को पिक करो, एज यू विश, नो इशू फॉर दैट. आप जैसे चाहें वैसे लिखें. फाइन. अब आता है ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा, एंड देन यू हैव टू गो फॉर सर्टेन डायमेंशंस. डायमेंशन इज नथिंग बट द आइडियाज थ्रू व्हिच you can drive your essay further. इंट्रोडक्शन के बाद हम 1 2 3 4 5 सीक्वेंसिंग में रखने चले जाते हैं. So when we talk about the impact of the AI, it's always better to talk about the tech advancement. What is tech advancement here? What is Industrial Revolution 4.0? How AI is different from the past three, you can say Industrial Revolution 1 2 3. लेकिन 1 2 3 के बारे में सिर्फ टच करो. यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम, एनर्जी, और बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी आप इस तरह के टॉपिक लिखो या किसी भी टॉपिक पे लिखो, ऑलवेज डू रिमेंबर वन थिंग, वाई टू एम्फेसाइज मोर. समथिंग डिमांड्स जस्ट टच एंड गो अप्रोच. फाइन. जिसे हम कहते हैं कि टच किया और निकल गए, दैट्स इट, नथिंग एल्स. क्यों? क्योंकि उसमें वर्ड वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है साहब. देयर इज नो रीजन टू वेस्ट द वर्ड्स. हम एम्फेसिस वहीं डालेंगे जहां पे क्रक्स है, जहां पे डिमांड है, और हमें लगता है कि वहां पे हमें एज मिलेगा.
Fine. So here you can do the first part is simply this. और यहाँ पे आप चाहें तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में आप ये भी लिख सकते हो कि कैसे डिफरेंट सेक्टर्स इंटीग्रेट कर रही है, हेल्थ कैसे कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग से कैसे कर रही है, एटसेट्रा. फाइन. एंड नाउ लेट्स कम टू द इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटी. फाइन. सो here you can say there is no order such कि हम पहले अपॉर्चुनिटी लिखेंगे फिर चैलेंज लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. मैं बार बार कह रहा हूँ, try to understand the key demand of the question, and then number two, you have to be very controlled and measured communication as far as demand is concerned. Rest, always believe if there are 1,000 students, there are 1,000 ways. मैं हमेशा कहता हूँ अगर 1,000 स्टूडेंट्स हैं 1,000 तरीके हो सकते हैं एक्सप्रेस करने का. जो की डिमांड है वो चेंज नहीं होगी, लेकिन की डिमांड को एड्रेस करने का तरीका, एक्सप्रेशन का तरीका बहुत तरीके से हो सकते हैं. ऐसा फॉर एग्जाम्पल आई कैन सिंपली स्टार्ट विद द impact and impact in terms of economy, and then I will link to the society. Fine. Economy, you can say it is going to, you can say, transform or touch every aspect of the economy, every sector. Fine. Be it manufacturing or health. Fine. Entertainment, communication, everything, and gradually it is happening. अभी आप ये कह सकते हैं कि बॉटम ऑफ द पिरामिड पे ये पहुंचा नहीं है, इसलिए जो कॉमन मैन है वो इम्पैक्टेड नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रीज इम्पैक्टेड होना स्टार्ट हो गई है. फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहां पे आप ये कह सकते हैं कि रोबोटिक इम्प्लीमेंटेशन से जो उनकी असेंबली लाइन है, पहले भी थी असेंबली लाइन और पहले भी यू कैन से रोबोटिक इम्प्लीमेंटेशंस थे, लेकिन अब और पहले में डिफरेंस ये है कि दैट नाउ इट इज टेकिंग केयर ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग. So my point is how it is impacted the manufacturing industry, health, etc., communication, entertainment, etc. See the Netflix. For that matter, you can say other entertainment platforms. Those who are using AI, वो साइकोलॉजिकल और सोशल प्रोफाइलिंग करती है साहब, और उसके हिसाब से रिकमेंडेशन है. फाइन. नाउ यू जस्ट थिंक ऑफ इट कि इसका कितना मेजर डिसरप्शन है. फाइन. नाउ डिसरप्शन में दोनों ही है, थ्रेट भी है, रिस्क भी है, अपॉर्चुनिटीज भी है. न्यू स्कीम ऑफ थिंग्स, न्यू एरियाज आर इमर्जिंग. फाइन. देन आई विल गो फॉर हाउ इट इज चेंजिंग द जॉब प्रोफाइल. एनीथिंग विच इज मंडेन रूटीन विल बिकम ऑब्सोलेट. न्यू क्रिएटिव इमेजिनेशन की जहां जरूरत होगी वो नए नए जॉब्स क्रिएट होंगे. फाइन. स्लोली ये होता चलेगा. फाइन. सो इट हैज सम इम्पैक्ट. आता हूं मैं अब इम्पैक्ट. इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा? इसका इम्पैक्ट मार्केट में होगा साहब, इसका इम्पैक्ट वर्कफोर्स में होगा साहब, इसका इम्पैक्ट लेबर में होगा साहब. फाइन. और जब ये लेबर में, वर्कफोर्स में होगा तो सब सोसाइटी में भी होगा. सोसाइटी में डिवाइड क्रिएट होगी, मोर स्किल की रिक्वायरमेंट होगी साहब. फाइन. और सबसे बड़ी जो चैलेंजेस है इसकी वो है अडॉप्ट करना. फाइन. बिकॉज इट्स सच ए डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी दैट adoption is a big challenge, very big challenge for the society, especially you can say the country like India or any developing country, other nations. Adopt करना really एक बहुत बड़ा challenge होगा. Then you can simply talk about its impact in, you can say, the education, health, environment. Fine. और इसके consequences को देखो, इसके implications को देखो, इसके risk को देखो. Fine. And then you talk about the policy, governance, etc. What world is doing, how it tries to address the threat, क्योंकि कुछ कंट्रीज की, कुछ कंपनीज की मोनोपोली होगी इस पे डेफिनेटली, और ग्रेजुअली दिख भी रही है, हो भी रहा है. फाइन. सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक. जो इसमें एक क्रिटिकल थिंकिंग को विजुलाइज कर पाएगा, कंसेक्वेंसेस को,
challenges को, risk को, etc. My big worry is that कि कहीं ऐसा ना हो कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 और एटसेट्रा पे आप ज़्यादा लिख दें. वो सिर्फ इनिशियल पार्ट है जहाँ टच करना है. रेस्ट यू हैव टू गो फॉर द इम्पैक्ट. और इम्पैक्ट कहाँ देखेंगे? रिस्क में देखेंगे, थ्रेट में देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ में देखेंगे. अपॉर्चुनिटीज़ के विद इन अपॉर्चुनिटीज़ भी हम देखेंगे तो उसमें भी रिस्क होगा, थ्रेट होगा. कैसे कि साहब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, लेकिन किसके लिए? Suppose if there is you can say it will bring new economy, fine, new jobs, etc. किसके लिए साहब? Big companies will hijack the things. They will create the monopoly. So these kind of things you have to you can say visualize and capture. This is what it is expected. Let's move to another question. तो इसी तरह से हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक एक करके लेते चलते हैं. और आप नेक्स्ट ईयर के लिए जब भी प्रिपेयर करो तो नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करो. आई ऑलवेज से दैट ऑलवेज थिंक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सप्रेशन, एट्सेट्रा. सिर्फ इंफॉर्मेशन के बल पे नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे. और नियर टू द एग्जामिनेशन तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैं एक टेंडेंसी देखता हूँ कि एग्जामिनेशन के बहुत क्लोज जाते हैं, फिर वो फाइट करना स्टार्ट करते हैं, वेदर इट इज़ एथिक्स, एसे और एनी अदर एरियाज. These areas are slow, try to understand. It always takes time. बात easy है, tough है, उसकी नहीं है. There is a nature and it takes time. It takes time, number one. Number two, it's very important for you to understand, it demands a consistency. It's a slow. चलने दो इसको. Why to keep it pending for the last moment? Let's take another topic, and that is again very easy. Climate change. Climate change challenges, challenge before the world. It says challenge before the world, challenge before the world, and strategies for mitigation and challenge before and strategies for mitigation and adoption. Fine. Again, if you look at topic is again easy, and again my response is same, that everyone will write. And if you talk to your peer group, अगर अपने peer group में बात करोगे तो देखोगे ज़्यादातर स्टूडेंट सेम लिख रहे हैं, यही टॉपिक लिख रहे हैं. क्लाइमेटिक चेंज तो सब 90% स्टूडेंट्स ने क्लाइमेटिक चेंज लिखा होगा, और वो जो लिख के आए होंगे वो कुछ नहीं, जीएस में जो आपने पढ़ा है वो आप उसमें से चिपका के आओगे, क्योंकि वो आपने एक टेम्पलेट बना लिया. एंड हियर कम्स द रिस्क, हियर कम्स द डिसास्टर. आपको ये लगता है कि कई स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई साहब हमने इतना लिखा है तो मार्क्स तो आ ही जाएंगे. नहीं आएंगे साहब. इंफॉर्मेशन ही, ऐसे इज नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन, ऐसे इज ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसे इज ऑल अबाउट ऑथर्स ऑन आर्गुमेंट. So let's come to the point. As far as again introduction is concerned, introduction में you can simply write about the keywords, in the sense climate change के बारे में discuss कर सकते हो, fine. और कुछ चाहो तो for you say recent example से भी आप start कर सकते हो. IPCC की report discuss कर सकते हो, climatic change का impact या कुछ एग्जांपल्स जो अभी हैं अर्बन फ्लड में या इरेटिक रेनफॉल में एट्सेट्रा, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, साइक्लोन से स्टार्ट कर सकते हो, वट एवर यू विश. अगेन दोनों ही तरीके हैं. क्लाइमेटिक चेंज, व्हाट इज क्लाइमेटिक चेंज एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द यू कैन से different from the geological past, in the sense how anthropogenic factors are playing crucial role than its natural occurrence. Fine. तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आईपीसीसी रिपोर्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरी चीज़ों से भी स्टार्ट करते हैं, और योर विश, जहाँ तुम्हें कंफर्टेबल लगे तुम वहीं से स्टार्ट करो. फाइन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट. सो इट्स सेज क्लाइमेटिक चेंज चैलेंजेस बिफोर द वर्ल्ड इन मिटिगेशन एंड एडॉप्शन. तो ये कह रही है कि साहब ये जो क्वेश्चन है वो ये है, फोकस यहाँ पे है. So here again the analysis is going to be in and around the challenges. So what are the challenges? Challenges about the mitigation and adoption you can understand. Simply you can start that first Earth Summit started in 1972, and then even after 50 years
you can say the problem of carbon footprint has increased, number one. Number two, global governance. You can say और global level पे बहुत सारे initiatives लिए गए हैं. But you have to raise the question that despite such initiative, why the problem is aggravating? ग्राउंड पे इम्पैक्ट क्यों नजर नहीं आ रहा? यही कह रहा है ना, चैलेंजेस बिफोर कि साहब देन यू कैन डिस्कस ये 50 years में हुआ क्या है, हुआ क्या है. It's not only about the Paris Climatic Summit or Rio or India. In the sense, there are a series of things. इंडिया ने G20 में भी एक थीम रखा सस्टेनेबिलिटी का, COP28 भी हुआ. फर्स्ट समिट से लेके आप यहाँ तक ब्रीफली you can say discuss that how the you can say the international or you can say at the global level the concerns has been raised, initiatives has been taken, promises has been made, but yet challenges and risk is increasing. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर हम आएंगे कि वो challenges है क्या, what are the challenges. So I will simply not list 1 2 3 challenges, rather I will write in terms of the you can say the examples, और वो जो रिस्क है उसको हम विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इन टर्म्स ऑफ वाटर प्रॉब्लम, सी लेवल राइज एटसेट्रा, कि वो चैलेंजेस किस किस तरह से हैं. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज हियर challenges before the adoption में और mitigation में क्यों नहीं आ रहा, why we are not able to do it, why we are not. The reason is economic development model. ये मॉडल ही कंजम्पशन बेस्ड है, कंजम्पशन बेस्ड है. So there is a paradox between the economic development model and sustainable development. Sustainable development model says consume less. It says economic development, current economic development model says consume more. Paradox है साहब, एक कह रहा खाते खाते मर जाओ, एक कह रहा कम खाओ. तो पैराडॉक्स है, और इस पैराडॉक्स की वजह से there is always a problem. And then the next and the biggest challenge is basically the human response. और आप कह सकते हैं कि इसको social response, fine, or you can say individual attitude, that we are not taking this problem as a very big threat at the individual level. Our individual contribution is very less, very low. We are looking for a country at national level, at policy level, at technology level, big company, etc. The question is what society can contribute to do so. और attitude एक बहुत बड़ा problem. ये दो बहुत ही critical point है जो एक student को लिखना चाहिए to take the edge. Again I am saying you, everyone will write. You ask to yourself, you ask to peer group, but what most of the students will do, they will bombard with the information, 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 information. ये क्वेश्चन है ही नहीं साहब, क्वेश्चन चैलेंज के ऊपर है, तो चैलेंज की बात करोगे ना आप, रिस्पॉन्सेस की बात करोगे, रिस्पॉन्सेस में कहाँ लिमिटेशन है, प्रॉब्लम है, उसकी बात करोगे, और क्यों है ऐसा, व्हाई इट इज सो. सो व्हाई इज द क्रिटिकल थिंकिंग. तो क्लाइमेटिक चेंज देखते ही सब खुश हो गए होंगे, अब तो मैं तहलका मचा दूंगा. मचाओ साहब तहलका, तहलका तो मार्क्स में दिखेगा ना, मचाने में नहीं दिखेगा. अगर वहाँ मार्क्स में दिखेंगे तो इसका मतलब तूने तहलका मचा के आया है, और अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ओपीएससी ने तहलका मचा दिया. तो दिस इज व्हाट इट इज, एंड देन यू कैन गो फॉर वे फॉरवर्ड. दैट्स इट. This is how you should go. This is how you should proceed. Fine. So this is second. Let's move to third topic. Third topic is about, in every question they are talking about challenges, 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 challenges. Challenges and possibilities. Third. Challenges and challenges and possibilities posed by the transformation, challenges and possibilities
posed by the transformation of education in the digital age. It's again very easy. So what you can do, simply you can start with the how you can say technology is being used in the education system, और वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो. कोविड से भी आप चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो कि कोविड में कैसे एडॉप्शन हुआ और कैसे इसने प्रॉब्लम सॉल्व की टेक्नोलॉजी ने, और डिजिटल एज में इसके क्या एडवांटेजेस रहे हैं, एट्सेट्रा. But the biggest issue is, again, it talks about the challenges and possibilities. Fine. So the very important is, the first challenge is accessibility and equity. Second is very important is quality of learning. Now, when you talk about the quality of learning, you can talk about both the things. How it is being adopted in the system, in the sense whether it is school, college, faculty training, etc., and simultaneously at the level of the students also. So it's at the level of the instructor also and the students also, because if the system is not adopting it well, then it may not use it properly, because you can say simply education in the digital age does not mean simply opening the YouTube and start teaching. So it's a very, you can say, passive learning, na? So the purpose of the you can say the education is failed, because you are not growing as a person, as a citizen. So the critical thinking, citizenship, how you are evolving, etc. are gone. क्योंकि एजुकेशन का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिग्री ही हिसाब नहीं है. तो इट कैन बी, टेक्नोलॉजी कैन बी इनेबलर, but it should meet the last, you can say, the ultimate purpose. Fine. And so if you look at the NEP, अगर आप NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखोगे, तो NEP is talking about the, you can say, the change maker lab, social emotional learning at the school level. Fine. कॉलेजेस में भी प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे 2 क्रेडिट पॉइंट के, 4 क्रेडिट पॉइंट के, एट्सेट्रा. So it's not simply about, you can say, the technology. It's basically activity based learning. It's basically about, you can say, the social emotional learning. Now the question is how this digital age or technology will address these kind of things. You have example of or you can say the recent developments. Why I'm saying all about this? Because if you look at, there are various research reports has been published. It's already in the public domain, that the rate of completion of the courses in the online mode is very poor. Forget about the coachings and all. जो कोर्सरा पे और जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके फीस बहुत हाई है, वहाँ भी रेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कोर्स इज़ वेरी पुअर, इज़ very, very poor. And so you have to think everything from the learning perspective. Technology is enabler. That's it, nothing else. So the real purpose of the education will remain same. And then comes, you can say, what is the alternative? What are the good practices in the world it is being practiced? What are the innovation is happening in educational content delivery? Because opportunity और possibility की भी बात कर रहा है, तो वो आपको innovation in content delivery, etc. This is what you have to discuss. That's it. So this is what it is. Let's come to the topic 4. Topic 4 again is use of social media in opinion
formation, in opinion formation and engineering. But again, my personal understanding that the many students will go for this. क्लाइमेटिक चेंज, सोशल मीडिया एक ऐसा टॉपिक है जो उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा. फाइन. उसमें से बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे वो, बिकॉज दे यू पीपल आर ऑलरेडी ऑन सोशल मीडिया डे इन डे आउट. तो काफ़ी कुछ लिखने के लिए ऐसा लगता है. लेकिन जब बहुत सारे स्टूडेंट सेम पे ही लिख रहे होंगे तो फिर क्वालिटी कैसे जज होगी? क्वालिटी क्रिटिकल थिंकिंग पे होगी, क्वालिटी आइडियाज़ पे होगी, क्वालिटी की जज एक्सप्रेशन और क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन पे होगी. ठीक है, तो दिस इज हाउ द थिंग्स विल बी इवेलुएटेड. और इसी पे जज होगी. फाइन. सो यूज ऑफ सोशल मीडिया इन ओपिनियन फॉर्मेशन एंड सोशल इंजीनियरिंग. हियर one thing is very important for you to understand what is mean by social engineering. क्योंकि ओपिनियन फॉर्मेशन तो बहुत आसान है, सब समझ में आएगा. यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है कि that how they do the class profiling, how they do the psychological profiling, how they run the targeted campaign, etc. Fine. सोशल, यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग का मतलब यहाँ पे ये है इस कंटेक्स्ट में. Fine. So again, here as far as intro is concerned, there are ample of things that you can write. हजार तरीके हैं साहब इस टॉपिक को तो स्टार्ट करने से. Right from the issue of Cambridge Analytica to you can say the propaganda to bot to anything you can start with कि वो कैसे इंफॉर्मेशन को एम्पलीफाई करती है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करती है, या फिर दूसरे साइड है कि गुड साइड भी है इसका. इट्स नॉट लाइक दैट ओनली द डार्कर साइड इज, गुड साइड भी है, कनेक्ट करती है, सिमलेस कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है, एटसेट्रा. फाइन. तो ये भी एक पार्ट है इसमें से. The big issue comes here, you can say, how and what quality of information we are consuming. Because it's not about information, it's more about quality of information. Because quality of information will decide everything about the opinion formation and social engineering as far as use is concerned. So, for example, post-truth का example है, deep fake का example है, propaganda का example है, manipulation का example है, etc. Fine. So this is what you can do. Then how the social engineering is done. So you can talk about the class profiling, you can talk about the psychological profiling, big companies, fine, marketing, political parties used to do so. Fine. और ट्रम्प के इलेक्शन में ये काफ़ी डिस्कस हुआ था, how Cambridge Analytica used to do the profiling of the individuals, etc., and then how they have run the targeted campaign. So this is you can talk about this. Then you can talk about the you can say the positive side of it also, about the communication, about the reach, fine, about the sharing information. So these are the things that you can write here. Fine. And then you can say, you can talk about some regulation, guidelines, etc. Here you can talk about 3 stakeholders, what company can do, what individuals can do, and what government can do when it comes to regulation, etc. Fine. इसमें तीनों का रोल कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है, वो देखेंगे उसमें से. Fine. So this is what it is. अब इसी के अंदर आप वायरल कंटेंट,
marketing, ad, propaganda, hate speech, bullying, जहाँ जहाँ जैसे जैसे use करना हो you can do. But by and large, the key ideas dimension will be in and around these only. So this is how you have to think about it. लेकिन यहाँ पे social engineering is very very important. If you understand the meaning of it, social engineering correctly, then probably you will do the justice. Otherwise, you will talk about the examples. इस तरह के टॉपिक में सबसे बड़ा डेंजर है एग्जाम्पल्स का लिखना. एग्जाम्पल्स का लिखना डेंजर है. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? Because most of the students will write too many examples. And their essay will become simply compilation of examples. Essay is not compilation of the ideas. Essay is not compilation of big ideas of the big people. Essay is not compilation of only examples. तो वो सिर्फ examples नहीं हो सकता ना उसमें से. And the last is, fifth topic is everybody's responsibility is nobody responsibility. Fine. If you compare all the topics, तो यही एक टॉपिक है जो थोड़ा सा अलग है. तो जिन लोगों ने भी अटेम्प्ट किया होगा उनको थोड़ा एडवांटेज होगा इफ दे हैव द कमांड ओवर द टॉपिक राइटिंग एटसेट्रा. फाइन. So what does mean by it? What is the meaning of the topic? When it says the phrase goes like this: everybody's responsibility is nobody's responsibility, refer to a situation where task or duty is neglected. It's left unattended because everyone assumes that someone else will do it. कोई और कर लेगा. Fine. Do you have example? Civic responsibility is the biggest example. Civic responsibility, our civic responsibility, तुम्हारा हो हमारा हो, the biggest example of it. Fine. इसकी बहुत बड़ी example है. Civic responsibility एक example है. Organization में भी इस तरह से, family में भी है सब. But then you have to you can say go for introduction. Again, in introduction you can simply talk about the crux of it. तो आप चाहो तो एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो कीवर्ड से स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल स्वच्छता अभियान से स्टार्ट कर सकते हो. फाइन. स्वच्छता अभियान से कर सकते हो सब, वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द आवर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एटसेट्रा. So again, I am saying you, it is all about your imagination and confidence and control over your expression. That this is the way I am more, or you can say, effective in terms of expression. The moment you try to imitate someone else, you are gone. क्योंकि अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं. The question is only one and only thing, that you should remain relevant. Whether your approach is relevant or not, whether your approach is effective or not, whether your communication is controlled or measured or not, this is what you have to practice for. Information तो तुम्हारे पास है, आगे भी रहेगा, क्योंकि जीएस इतना पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो इन्फॉर्मेशन की तो कोई इशू ही नहीं है ना. और इन्फॉर्मेशन सबके पास है, तुम अकेले तो हो नहीं जो ये काम कर रहे हो, सभी कर रहे हैं. और स्पेशली जो कॉम्पिटेंट कैंडिडेट हैं वो तो कर ही रहे हैं सब. तो इसीलिए ये जो थिंकिंग आपकी है वो यहाँ रिफ्लेक्ट होती है कि आप इंफॉर्मेशन को यूज कैसे कर रहे हो, हाउ यू आर एबल टू, और व्हाट यू आर एबल टू सी, इन व्हिच कंटेक्स्ट यू आर पुटिंग इट. इफ इट इज रेलेवेंट, वेरी गुड. एंड इफ इट इज सिंपली द कंपाइलेशन ऑफ द आइडियाज, कंपाइलेशन ऑफ एग्जाम्पल, यू आर गॉन. तो ये एक इसमें से देखना होगा, इसमें से. नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस, it is all about, you can say, the leadership. It's all about accountability. अब इसको हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी देख सकते हैं.
इसको हम इंडिविजुअल लेवल पे भी देख सकते हैं. Fine, because it talks about responsibility. Responsibility and accountability, there are two things. Responsibility is self-imposed. Accountability is more legal. And that's why the whole story is basically, it has more ethical dimension, individual, attitude, culture, rather than legal. लीगल भी होगा लेकिन सिर्फ एक डायमेंशन होगा इसका, सिर्फ एक डायमेंशन होगा. So here you can talk, or you can start with this. Then you can talk about the culture. Culture in the sense here that how some societies are, you can say, more responsive to the problems. For example, take the issue of the corruption itself. Why some of the countries are successful in terms of keeping the corruption at the low level? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है साहब? कुछ करप्शन, कुछ कंट्रीज, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी. वहाँ लीगल फ्रेमवर्क भी है, बट पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो it's not corruption free, but they are able to check the corruption. They are able to keep it at the minimum. वो एक कंट्रोल में रखने में कंफर्टेबल है. So you can talk about the social norms, culture. इसी का पार्ट हो जाएगा, वो एक ही पैराग्राफ में हो जाएगा. कलेक्टिव एक्शंस. फाइन, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ कोविड. कोविड पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यू कैन इजिली रिकॉल इट. फाइन, हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी चाहो तो तुम ले सकते हो इसमें से. फाइन, देन यू कैन टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस, बिग ऑर्गेनाइजेशंस, or the government. In government, the bureaucracy, you can talk about the bureaucracy. And then you can talk about the examples. Examples को लेके इसको को लिखो. That's it. And then you can talk about the role model. We can talk about successful initiatives, practices, etc. and its impact. क्योंकि इसका इम्पैक्ट देखना जरूरी है, क्योंकि जब सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करेंगे तो उसका इम्पैक्ट कैसा होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा. दैट्स इट, नथिंग एल्स. दिस इज हाउ यू शुड थिंक, दिस इज हाउ यू शुड प्रैक्टिस. तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप ब्रेनस्टॉर्म करो, रफ वर्क करो, डिस्कस विद द मेंटर्स. क्योंकि जब तक विजुअलाइजेशन नहीं आएगी, इमेजिनेशन नहीं आएगी, जब तक आप ये काम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ आप डेली मॉक लिखने से या 5 टेस्ट लिखने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला. कोई फर्क नहीं पड़ता. ज़्यादातर स्टूडेंट इसी कंफ्यूजन में है कि ये लास्ट मोमेंट पे लिख लेंगे, या इसी परसेप्शन में कि लास्ट मोमेंट पे लिख लेंगे एंड दे आर गॉन. इट्स कंटिन्यूस. इट्स बेसिकली अबाउट इमेजिनेशन थिंकिंग. क्योंकि लिखते में आप क्या करते हो, आप अपनी थॉट प्रोसेस से तो कैप्चर करते हो ना. तो मेरा सवाल यह है कि सब थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए आप क्या कर रहे हो. सिर्फ 4 टेस्ट लिखने से या 5 मॉक लिखने से तो थॉट प्रोसेस आती नहीं है ना. थॉट प्रोसेस तो ग्रेजुअली इवॉल्व होगी, कंटिन्यूस प्रैक्टिस होगी, थिंकिंग से होगी, अंडरस्टैंडिंग से होगी. इसलिए कुछ कैंडिडेट्स हैं विद द सेम कंटेंट दे आर एबल टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद द सेम कंटेंट, अदर्स आर नॉट. सो दिस इज हाउ यू शुड थिंक, approach, and this is about all about the today's discussion. Thank you very much.